Good morning, children. How are you? Fine. I am your Hindi teacher from Dr. Vision School. My name is Manshad. Yes, children. Today we are going to learn our Hindi subject. हम लोग सब कारक के बारे में पढ़े हैं ना बच्चों? हमारा लेसन क्या चल रहा है? कारक लेसन चल रहा है. So all of you take your test books, children. Take your test book. Hold it. Yes. Having your test books? Are you ready for the class? Yes, in previous video what we all learned, से का प्रयोग, में का प्रयोग, पर का प्रयोग. शब्द हम लोग सब सेंटेंस पढ़े थे ना बच्चों? हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ. तुम लोग भी बुक पकड़ो. से, with, than, from, of. पेड़ से फल गिरता है. The fruits falls from the tree. The fruits fall from the tree. This is from page number 16 in your Hindi textbook, children. Again I am reading. Why? Because you will also read. पेड़ से फल गिरता है. The fruits falls from the tree. आम अंगूर से मीठे हैं. आम अंगूर से मीठे हैं. Mango is sweeter than grapes. लड़की पेंसिल से चित्र बनाती है. The girl draws a picture with a pencil. बेटी माँ से मोटी है. The daughter is fatter than her mother. गंगा हिमालय से निकलता है. गंगा originates from the Himalayas. प्रतीक सबसे अच्छा है. प्रतीक is the best of all. प्रतीक is the best of all. गिरना to fall. चित्र picture. माँ mother. मीठा sweet. हिमालया हिमालया. सब all. Like this, page number 16 completed. As children, now बच्चों मेरे साथ पढ़ो. हाँ शाबाश, अच्छा पढ़ रहे हो. नेक्स्ट, मैं इन इनसाइड. तालाब में मछलियां है. The fishes are in the pond. The fishes are in the pond. बोरे में चावल है. बोरे में चावल है. The rice is in the bag. पार्क में बच्चे खेल रहे हैं. The children are playing in the park. The children are playing in the park. अलमारी में किताबें हैं. The books are in the अलमारी. पर on. बच्चों बोल रहे हो ना? दीवार पर बिल्ली है. दीवार पर बिल्ली है. The cat is on the wall. मेज पर कंप्यूटर है. The computer is on the table. The computer is on the table. यहाँ तक हम लोग सब पढ़ चुके हैं बच्चों. अब हम लोग नए शब्द लिखने जा रही हूँ. हाँ बच्चों मेरे साथ बोर्ड पे देखो. नए शब्द. नए शब्द न्यू
words, new words. तालाब, तालाब माने पॉन्ड, तालाब माने पॉन्ड. मछलियां, मछली, फिश, मछलियां नॉट गिवन, मछली. चावल, चावल, चावल माने राइस. पार्क, పార్క్ మనే పార్క్, మనం ఆడుకుంటాం కదమ్మా, దాన్నే పార్క్ అంటారు. చావల్ రైస్ అంటే బియ్యం, బియ్యం తింటాం కదా మనం, అన్నం తిన్నప్పుడు బియ్యం, దాన్ని చావల్ అంటారు. బచ్చే, బచ్చే, బచ్చే అంటే ఏంటమ్మా, చిల్డ్రన్, చిల్డ్రన్ ని बच्चे अंटारू. बोरे, बोरे, बाको ओ की मात्रा बो, राको ए की मात्रा रे, बोरे. बैग, बोरे माने बैग. दीवार, दीवार, दीवार माने वॉल, दीवार माने वॉल. मेज, मेज, मेज माने टेबल, मेज माने टेबल. कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर माने कंप्यूटर. We all know computer. You all have, so many are having computer at home also ना. कंप्यूटर माने कंप्यूटर. तालाब, बोलो बच्चों, तालाब, पॉन्ड. मछली, फिश. चावल, राइस, चावल, राइस. पार्क, पार्क. बच्चे, चिल्ड्रन. बोरे, बैग. दीवार, वॉल. मेज, टेबल. कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर माने कंप्यूटर. हाँ बच्चों, ये सब हमारे नए शब्द है पेज नंबर 17 में. पेज नंबर 17 से नए शब्द. We are going to start now page number 18. Okay children, from your text book turn the page. Page number 18 I am going to start writing here so that you can also read along with me. See, what is that page number? Page number 18. Okay children, के लिए. पेज नंबर 18 में क्या है? के लिए. पेज नंबर 18 में के लिए का प्रयोग है. क्या है इसमें? के लिए. कारक का और एक एग्जाम्पल है, ये कारक का एक एग्जाम्पल है. के लिए, फॉर. ओके चिल्ड्रेन, देखो क्या दिया है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में. एक बार देखो बच्चों टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18. हाँ, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 18 चिल्ड्रेन. वहाँ राइट, वहाँ माँ के लिए, माँ के लिए चाय लाई. वह माँ के लिए चाय लाई. She bought tea for her mother. She bought, bought అంటే bought tea, brought tea for
sorry, bought not brought. Brought tea for her mother. She brought tea for her mother. Yes children, this is one type of कारक का एग्जाम्पल है के लिए से. नेक्स्ट वन, वहाँ यह कमीज जा के नीचे जा ట్రెస్ ఇచ్చి చెప్పాలి, అందుకే జా కింద చుక్కొచ్చింది. कमीज आप के लिए है, आपके लिए है. वह कमीज आपके लिए है. यह कमीज आपके लिए है. So what is the English version? This shirt is for you. This shirt is for you. This shirt is for you. यह कमीज आपके लिए है అంటే మీ గురించి షర్ట్ తెచ్చాను అని చూపిస్తున్నాడు తను. సో यह कमीज आपके लिए है. मैं निशा के लिए गुड़िया लाई. मैं అంటే నేను అని, मैं निशा అన్నది పేరు, के लिए गुड़िया लाई. मैं निशा के लिए गुड़िया लाई. गुड़िया అన్నదేంటి డాల్, मैं అన్నదేంటి సర్వనామ్, నిషా అన్నదేంటి సంజ్ఞ. సర్వనామ్ సంజ్ఞ రెండు యూజ్ అవుతున్నాయి కారక్ గురించి. సి मैं निशा के लिए गुड़िया लाई. मैं निशा के लिए गुड़िया लाई. I brought a doll for Nisha. I bought a doll for Nisha. నిషా గురించి ఏం తెచ్చాను, డాల్ ని తెచ్చాను అని చెప్తుంది. वह पीने के लिए पानी लाती है. वह पीने के लिए, we'll write here, वह पीने के लिए पानी लाती है. दिस इज के लिए क्या प्रयोग. शी ब्रिंग्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग. शी ब्रिंग्स वाटर फॉर డ్రింకింగ్. తాగడానికి గురించి నీళ్లు తెచ్చింది. ఎవరి గురించి తెచ్చింది, తను నీళ్ళు తాగడానికి తెచ్చింది. వహ తెచ్చింది, అదే మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. కిసాన్ గాయ్ కే లియే ఘాస్ లాతా హై. కిసాన్ गाय के लिए घास लाता है. So here what the farmer brings grass for the cow. The farmer brings grass for the cow.
Okay, children. And last one. Last one. Here we can write. Last one. अध्यापक बालक के लिए पुस्तक लाया. अध्यापक बालक के लिए. अध्यापक बालक के लिए. We can use के लिए बोल्ड वेरियस एग्जाम्पल्स यूज होते थे. ओके ना. बालक के लिए पुस्तक. पुस्तक माने क्या है? बुक. पुस्तक लाया. Okay, children. Here in English, the teacher brought a book for the boy. The teacher brought a book for the boy. Okay. In this, we are having this many examples only. Now we are going to read. Okay, children. वह माँ के लिए चाय लाई. वह माँ के लिए. बोलो बच्चों मेरे साथ. वह माँ के लिए चाय लाई. She brought tea for her mother. Her mother. यह कमीज आपके लिए है. यह कमीज आपके लिए है. This shirt is for you. This shirt is for you. मैं निशा के लिए गुड़िया लाई. मैं निशा के लिए गुड़िया लाई. I brought a doll for Nisha. I brought a doll for Nisha. वह पीने के लिए पानी लाती है. वह पीने के लिए पानी लाती है. Yes, children. Slowly I am telling so that you can also read along with me. वह पीने के लिए पानी लाती है. She brings water for drinking. किसान गाय के लिए घास लाता है. किसान गाय के लिए घास लाता है. The farmer bring grass for the cow. The farmer bring grass for the cow. बोलो बच्चों शाबाश. अध्यापक बालक के लिए पुस्तक लाया. अध्यापक बालक के लिए पुस्तक लाया. The teacher brought a book for the boy. The teacher brought a book for the boy. This is our examples completed by this. Now, Naye Shabd are there down. We will write that one also and we will practice. Okay, children. Page number 18 only. Same down. See all of you. Naye Shabd are there. There, that one only we will practice now. I am writing on the board also that one, so that you can also read along with me. नए शब्द. New words. चाय. टी. చాయ్ మనే టీ. అందరం తాగుతాం కదా మార్నింగ్.
tea, yes or no? Your parents will drink tea. Chai mane tea. Kameez mane shirt. Kameez mane shirt. Okay, children. Then ma, mother. Ma, mother. Ma mane mother. Pani. Pina. Pani not pina. Pina mane drink. Pina. Pina mane drink. To drink. Over. Now किसान. किसान माने क्या है? फार्मर. यस चिल्ड्रेन, किसान माने फार्मर. द लास्ट वन गाय. गाय माने काउ. घास माने ग्रास. घास माने ग्रास. पुस्तक. ऑल ऑफ यू नो ना पुस्तक माने क्या है? पुस्तक माने बुक. पुस्तक माने book. Like this, some hard words are there, so that we can also practice these all words. Okay children. So पहला वाला क्या है? चाय. चाय माने टी. कमीज. क्या ये? कमीज. कमीज माने शर्ट. कमीज माने शर्ट. माँ. माँ माने मदर. माँ माने mother. पीना to drink. पीना to drink. किसान. किसान माने फार्मर. किसान माने फार्मर. गाय. गाय माने काउ. घास. घास माने ग्रास. पुस्तक. पुस्तक माने बुक. पुस्तक माने बुक. Some hard words which are there in your textbook. I covered all these hard words so that you can also read children. Now what is your purpose? What is you have to do? మీరు ఏం చేయాలి అంటే పేజ్ నెంబర్ 15 నుంచి పేజ్ నెంబర్ 18 వరకు మొత్తం అంతా చదువుతారు ముందు. How many times you will read? 5 times you will read. Each one 5 times. माँ ने खाना पकाया. माँ ने खाना पकाया. Like this you will read and understand yourself what you are reading. So if any having your doubts, you can ask me also. You can do phone call also. Okay children, these 2 pages you should read and write in your notes neatly children. నీట్గా చాలా అందంగా రాస్తారు. ఎలా రాస్తారు? మీలాగా అందంగా రాయాలి. ఓకేనా? మీరంతా రాస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? మనం అందరం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. పెన్సిల్తో నీట్గా ఎక్సర్సైజ్ అంతా రాద్దాం. ఓకే, బాయ్ చిల్డ్రన్.